Hello and welcome back to my channel. This is your friendly neighborhood Tarita Ankan. I hope you are doing well. This is the monthly reading for Taurus or Rishabh Rashi, Sun Moon Rising for the month of September 2025. This is a general reading based on collective energy, so it may or may not resonate with you. If it doesn't resonate with you, you can check out the reading for your other signs. If you don't know how to check your other signs, you can check out my previous video on zodiac signs. Link is in the description below. Also, do stick to the end of the video to know your monthly oracle guidance card for this month. And if you're new to the channel, don't forget to subscribe to the channel and hit the notification bell so that you can get notified whenever a new video is uploaded. So let's get on with the reading for Taurus or Rishabh Rashi. And let's see what messages are coming for you this September. So Taurus, इतने हड़बड़ी में आप कहाँ जा रहे हैं मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है. There is something that you are rushing towards. There is something that you feel very passionate towards, and you are like being very impulsive towards something. See, in most cases, when we are being impulsive, when we are rushing, things don't usually go our way. And I have mentioned this in my previous videos as well. Because for your theme for the month, you do get the Knight of Swords. So there is action, there is lots of action and very impulsive action. But like I said, in most cases, impulsive decision लेने से अच्छी चीज़ें होते नहीं हैं, बिगड़ते ही हैं most of the cases में. But the energy that surrounds you this month is the Nine of Cups. So जो भी डिसीजन आप ले रहे हैं, जो भी एक्शन आप ले रहे हैं, इम्पल्सिवली ले रहे हैं, थोड़ा बिना सोचे समझे ले रहे हैं, काइंड ऑफ पैशनेटली ले रहे हैं, but this will eventually lead you to this Nine of Cups energy of satisfaction and wish fulfillment. So a very different kind of energy, I would say, this month for you, but a good energy overall. We will get into this as we go along, but let's look at the other cards. Now, when it comes to your career and finances, I see a lot of stress is there. काफ़ी तनाव में हैं आप, काफ़ी चीज़ें आपको लाइक मेंटल इश्यूज दे रहे हैं, लाइक मेंटल स्ट्रेस दे रहे हैं, डिप्रेशन दे रहे हैं, स्लीपलेस नाइट्स आर देयर, एंड चीज़ें आपके हिसाब से तो हो नहीं रहे. मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है आपको, और व्हेन इट कम्स टू योर करियर एंड फाइनेंसेस दिस मंथ, एट लीस्ट इन September. So yeah, I would seriously suggest you take care of that. Do focus on methods to improve your mental state, to improve your mental energies. हो सके तो मेडिटेट कीजिए, बहुत हेल्प करता है. आई डू इट माई सेल्फ समटाइम्स एंड इट रियली हैज़ अ पॉजिटिव इफेक्ट. सो मेडिटेशन पे ध्यान दीजिए. अगर आपको जो चीज़ में लाइक सुकून मिलता है ना, वो चीज़ पे फोकस कीजिए, एटलीस्ट फॉर दिस मंथ व्हेन इट कम्स टू योर करियर एंड फाइनेंसेस. नाउ व्हेन इट कम्स टू योर लव एंड रिलेशनशिप्स, गुड एनर्जीज. अगर आप कोई चीज़ को लेके आपको लाइक कंफ्यूजन था, कोई चीज़ को लेके आप क्लियर नहीं थे चीज़ें रिलेटेड टू योर लव एंड रिलेशनशिप्स, दिस इज़ ए क्लियर साइन दैट आपको वो क्लैरिटी मिलने वाला है, आपको वो ट्रांसपेरेंसी मिलने वाला है रिलेशनशिप्स में. इफ़ यू आर मैरिड, a lot of things are gonna get clear between you and your partner, between you and your spouse. And like कोई अगर लाइक कोई चीज़ था जिसको लेके तनाव था, कोई चीज़ था जिसको लेके कन्फ्लिक्ट था आप लोगों में, देन आई सी दैट यू लाइक गेटिंग पॉजिटिव आउटकम आउट ऑफ इट. लाइक देयर इज अ सोल्यूशन ऑब्वियसली देयर विद, लाइक ऑब्वियसली देखिए क्लैरिटी आ रहा है, ट्रांसपेरेंसी आ रहा है, तो विद दैट a lot of things are gonna get cleared and a lot of issues are gonna get resolved. Even like if you're married or if you're not, in both ways a lot of issues are gonna get cleared. If you are single, chances are there that something new is gonna come your way, something like नए beginnings के chances बहुत ज़्यादा है इस card से. If you have been pursuing a person in your life, and this is also a sign that you are gonna get success, because with the Ace of Sword,
you do get a lot of success. You kind of come out as victorious in your pursuits. Now, when it comes to your health, I see you neglecting a lot of things in your health. आप आपके हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं एंड लाइक कोई चीज़ है मोस्ट प्रोबेबली लाइक अगर आप कोई चीज़ हेल्थ रिलेटेड कोई चीज़ को परस्यू कर रहे थे उससे आपको सपोज आप जिम कर रहे थे या आप कोई लाइक कोई भी टाइप ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज में इन्वॉल्व थे, आपको कुछ आउटकम चाहिए था उससे, वो आपको मिला नहीं है. नाउ यू आर लाइक नॉट इंटरेस्टेड इन फोकसिंग ऑन योर हेल्थ इम्प्रूवमेंट्स. बट दिस इज लाइक मत कीजिए ऐसा, वैसा करना नहीं चाहिए बिकॉज आपने एफर्ट्स दिया, आपके हिसाब से वो हुआ नहीं है बोल के आप कंप्लीटली नेग्लेक्ट करेंगे आपको हेल्थ को, तो वो और भी बिगड़ते जाएगा and there won't be a solution to your health issues, because I see you being very much negligent about your health. Opportunities हैं आपके पास हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, बट आप उस पर फोकस कर नहीं रहे हैं. I would seriously suggest you to take things into consideration, ways to improve your health. Focus more on your health and energies. Neglect मत कीजिए अपने हेल्थ को इस मंथ. Now the other energies that is there, I see a person again involved. This is basically you. So you are trying to kind of balance a lot of things. You are kind of focusing on yourself. Not health wise, because health wise you are definitely not, but otherwise I see you trying to balance a lot of things, trying to go with the flow. बहुत ही like middle approach ले रहे हैं आप लाइफ में in some cases of your life. And overall I would say कि थोड़ा रेस्ट कीजिए, थोड़ा फोकस कीजिए अपने हेल्थ पे. अगेन देखिए आपके और एक कार्ड जो आपको फोकस कर रहा है हेल्थ रेस्ट करने के लिए, थोड़ा आपके ऊपर फोकस करने के लिए और थोड़ा धीरे से चलने के लिए लाइफ में, थोड़ा लाइक ठहर के चलिए लाइफ में. दिस इज अ कार्ड ऑफ होल्डिंग योरसेल्फ बैक, नॉट रशिंग थिंग्स एंड गिविंग योरसेल्फ टाइम. सेल्फ केयर का कार्ड है, तो डू फोकस ऑन सेल्फ केयर, डू टेक रेस्ट इफ यू हैव टू, बिकॉज इट इज हाईली mandatory and highly advised for you to take rest, because see with the theme of your card as a Knight of Swords, like एनर्जी दिखा रहे हैं कि आप अगर इम्पल्सिवली एक्शन लेते भी हैं, रश करते भी हैं, आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, बट उसका एक इफेक्ट आपके हेल्थ पे पड़ेगा एंड दिस इज गोइंग टू बी अ बिग इशू इन द लॉन्ग रन. सो इफ यू फील लाइक यू नीड टू टेक इम्पल्सिव एक्शन, do it, because there is positive outcome at the end of it, but at the same time do focus on self care. Just like rush करते मत जाइए कोई चीज के तरफ, rush कीजिए but at the same time take care of your health as well, because this is what is there in the reading, very strong presence of self care. Now the thing you should focus upon as well this month, the card is the Lovers. So yeah, try focusing on loves basically. Try focusing on the person that you, if you have a partner in your life, try focusing towards them, try to understand them, try to understand how they work, how they're what they think about, or how their thought process works, how they feel towards you, or how they react to situations, how you should react to their situations. So this card kind of signifies you to focus on you and your partner as well as the entire relationship. If you are single, this is like high probability kind of advice that you should kind of keep on pursuing the person that you have been pursuing, because see, there is victory, there is success coming your way in terms of love and relationship, and there is also the Lovers card. So a strong advice for you to focus on your emotional journey, on your romance, on your love aspect in this September. So yeah,
ओवरऑल गुड एनर्जीज, बैलेंस्ड एनर्जीज, बस वही हेल्थ पे फोकस कीजिए एंड मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ, बिकॉज मेंटल हेल्थ में भी आपको नाइन ऑफ सोर्स आ रहा है, तो देर इज मेंटल स्ट्रेस, देर इज फिजिकल स्ट्रेस। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं आप आपके ऊपर, तो उस पर थोड़ा फोकस कीजिए दिस मंथ। नाउ लेट्स लुक एट व्हाट messages are coming for you from the oracle cards this month. You get extraordinary and a beautiful pickup. There's a wild and impetuous uniqueness to you that deserve to be honored. So yeah, in a way, it kind of signifies that you need to honor your own uniqueness and this wild side of you that you should focus upon. So the more you focus upon your own self, your own uniqueness, and you respect your own uh, consciousness and self, the more rewards you can reap out of life this month. So yeah, overall good energies. We again the same cards are cards are showing the same thing. You need to focus on your self and focus on self care, and as well as like in both physical and mental aspects. So yeah, Taurus, that would be all for the reading this month. If the reading resonated with you, do like the video and leave a comment to claim the reading. Also, don't forget to subscribe to the channel. And I'll see you guys in the next video. Till then, have a good day and bye.